बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के हवाले से नई वीडियो के साथ, कैस पेपर्स की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के लिए बायोलॉजी के सेक्शन ज़ूलॉजी के मॉडल ज़ूलॉजी के गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि बॉटनी की थी। उसमें मेरा इरादा ये था कि दोनों को साथ ही में डिस्कस कर लेता, लेकिन चूंकि वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी तो उसको मैंने सिर्फ बॉटनी के लिए ही रख दिया था। आज हम इंशाल्लाह ज़ूलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको नोट करते जाएं। इंशाल्लाह ये आपके लिए जो है एक तरह से ज़मानत है कि आपके इंशाल्लाह इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ज़ूलॉजी का जो सेक्शन है उसको अगर हम डिस्कस करें तो आपके पास चैप्टर नंबर 15 है, होमोस्टेसिस। ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर। What is the use of counter current mechanism in kidney? What is the role of kidney as an endocrine organ? What is the impact over the human body if kidneys suddenly or gradually lost the filtering abilities? What are the problems associated with kidney transplant? What is hypothermia? How body overcome this condition? लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद लेबल्ड डायग्राम, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी। चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास इंपॉर्टेंट। हाउ इज द कार्टिलेज यूजफुल फॉर आवर skeletal system? Give a comparison of major types of joints. Give a comparison of types of muscles. Why is calcium essential for cross bridge formation? Explain the different types of cartilage. लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास इस चैप्टर में एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, explain the structure of skeletal muscles and alter structure of skeletal muscle fiber with labeled diagram. Explain the cross bridge cycle of muscle contraction with labeled diagram. नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, व्हाई इंपल्सेस मूव फास्टर इन myelinated neurons, why interneurons are called association neuron, differentiate between electrical and chemical synapse, CNS and PNS, excitatory and neurotransmitters inhibitor, parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Define the following terms: endorphins, Pacinian corpuscles, reflex arc, nociceptors, stroke and meninges. ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, describe mechanism of action, membrane potential, describe sensory receptors and their working. चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो व्हाई हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स, व्हाई posterior pituitary is called neurohypophysis, why pancreas is called as exocrine and endocrine gland, why secretions of adrenal cortex are called corticosteroids, differentiate between hypothyroidism and hyperthyroidism, insulin and glucagon, calcitonin and parathyroid hormone, lipophilic and hydrophilic hormones. Define the following terms: hormones, goiter, thymosin, atrial natriuretic hormone, erythropoietin. ठीक है,
लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड, their lobes and hormones of pituitary glands. Describe hormones and their functions of other endocrine tissues. Chapter number 19, animal behavior. Short questions में what is reflex? Give 3 examples of reflexes in vertebrates. Define biological rhythms. How are biological rhythms important to man? What do you know about taxis? Give examples of positive taxis and negative taxis. What is the difference between innate behavior and learning behavior? Long questions में आपके पास इस चैप्टर में define innate behavior in terms of reflexes shown by vertebrates and invertebrates. What is imprinting? Describe the imprinting in young ducks. How is it adaptive? Describe the agonistic behavior and relate it with the maintenance of social order in terms of territories and dominance hierarchies. Next chapter, reproduction. Why urethra is in male is called urinogenital duct. Why hormonal system of female is better than male. Why testes descend down in human male fetus before birth. Why all symptoms, what are symptoms of gonorrhea? Why inner uterine wall thicken during secretory phase? Differentiate between the following: testes and ovaries, spermatogenesis and oogenesis. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास इस चैप्टर में describe the structure of male reproductive system, identifying their functions, explain the structure of female reproductive system and describe their functions. Describe phases of menstrual cycle. Chapter number 21, development and aging. Why cleavage in birds and reptiles called meriblastic? How embryonic tissues influence other embryonic tissues. Differentiate between blastula and gastrula. Why monozygotic twins having same sex? जी इसके बाद आपके पास लाइन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, लिस्ट द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द 3 germ layers. Describe the events of development in humans in terms of first, second and third trimesters. तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग एंड शॉर्ट वाइज जोलॉजी के। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।